Assalamualaikum students. Today we will discuss about kidney transplant. But before that, let me recapitulate our previous lesson. Student, our previous lesson that was about renal failure or kidney failure, in which we discussed that when a person suffers from renal failure, then two procedures they can be made. One is called as dialysis and the other one is called as what? Kidney transplant. In the previous lecture, we discussed dialysis in detail. We studied that dialysis, it is of two types. One is called as hemodialysis and the other one is called as what? Peritoneal dialysis. In the hemodialysis, we discussed that a dialyzer that is used, which is a tank in which synthetic fluids made up of cellophane having semi-permeable membrane that is used, and then we discussed that a catheter that is used to take the blood out of the body from an artery, and then it is sent into that of the dialyzer, which is surrounded by a fluid called as what? Dialysate. Between the blood and dialysate exchange of toxins, urea and other excess of salts that occurs, and then this clean blood that is sent back with the help of another catheter through a vein back into the body. Then we discussed peritoneal dialysis. Actually, peritoneum is a membrane around the abdominal cavity inside the body wall, और इसके अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसके साथ एक्सचेंज ऑफ waste or toxins that occur between the dialysate and that of the blood. और इसमें भी हमने पढ़ा था कि two catheters they are surgically placed inside the abdominal cavity, और एक कैथेटर जो है वो उसके थ्रू डायलिसेट एंटर होता है और दूसरे कैथेटर से लूज डायलिसेट जो है दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. अब जो है इसमें डायलिसेट जो होता है दैट इज प्रेजेंट दैट इज सेंट इनटू द एब्डोमिनल cavity, and then we discussed about meaning of hemodialysis. The word hemo means blood, dialysis means cleaning. So blood cleaning is called as what? Hemodialysis. I told you that during peritoneal dialysis, again cleaning of blood that occurs, but why do we call it peritoneal dialysis? Because a membrane called as peritoneum that is used, that's why it is called as peritoneal dialysis, and the word peri means around and toneal, that means stretch out. Okay, and now our today's topic is kidney transplant. अच्छा जी, किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर. इसमें जिसमें एक आपका हेल्दी किडनी को ग्रेफ्ट किया जाता है इनटू अ पर्सनस बॉडी हु इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक रेनल फेलियर और किडनी फेलियर, यानी जिसकी बॉडी को एक इरिवर्सिबल किडनी डैमेज हो चुका है, उसकी बॉडी में आपने एक हेल्दी या फुली फंक्शनिंग किडनी को क्या करना है, उसकी ग्राफ्टिंग करनी है. दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज व्हाट? किडनी ट्रांसप्लांट. Okay, next, what are the principles of kidney transplant? Student, the first principle is the kidney graft is taken from a deceased or cadaver donor or from a related or unrelated person. यानी आप एक डेड बॉडी से भी उससे ले सकते हो और एक डोनर से भी ले सकते हो जो कि उस पर्सन का रिलेटिव भी हो सकता है और जो है अनरिलेटेड पर्सन भी हो सकता है. Okay, then the second principle is that there should be ABO blood group compatibility, कि उसकी मैचिंग होनी चाहिए बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट के ब्लड ग्रुप्स की. डोनर इज अ पर्सन हु डोनेट्स एंड रिसिपिएंट द वन हु रिसीव्स. ठीक है, जो देता है उसको डोनर बोलते हैं, जो अपना किडनी दे रहा होगा वो डोनर होगा, या जो भी अपना ऑर्गन पर्सन ट्रांसप्लांट कर रहा होता है, सॉरी डोनेट कर रहा होता है, उसको हम डोनर बोलेंगे, और जो उसको रिसीव कर रहा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिपिएंट.
The third principle is it is usual to select donor kidneys on the basis of human leukocyte antigen. ठीक है, अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस क्या होती हैं? आपके ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स के ऊपर और टिश्यूज के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स के। यानी अगर बाहर से कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो जाता है या ग्राफ्ट हो जाता है और वो अगर आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा होता, तो उसकी ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है वो क्या कर देते हैं? रिजेक्शन कर देते हैं। तो अगर इसकी मैचिंग होगी तो ये आपकी ग्राफ्टिंग सर्वाइवल को या आपके जो ग्राफ्ट टिश्यू है उसके सर्वाइवल को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। ओके, देन अ पर्सन कैन लिव नॉर्मली विद जस्ट वन किडनी, यानी जिसने डोनेट किया है वो एक किडनी के साथ भी, और जिसको मिला है, जो रिसिपिएंट है, वो भी एक किडनी के साथ, यानी अगर उसके बोथ द किडनीज दे आर डिजीज। ठीक है, तो अगर आप एक भी किडनी उसकी बॉडी के अंदर जो है उसकी ट्रांसप्लांटेशन कर देते हो, उसकी ग्राफ्टिंग कर देते हो, तो वो पर्सन जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज this is an additional information about human leukocyte antigens. ठीक है, human leukocyte antigens play an important role in protecting you from infections, but they also make organ transplantation more complex. How they make organ transplantation complex? Actually, human leukocyte antigens are protein markers found on nearly all of your body cells. They help tell your immune system. Immune system is the defense system of your body. तो ये उसको बताते हैं कि which cells belong to your body and which are not. ठीक है, तो जो आपकी बॉडी से belong करते हैं they shouldn't be attacked, and they tell which ones are invaders. Invaders means जो बाहर से आए, ठीक है, that your immune system needs to fight. If they are not, if blood group are antigen matching that is not there, then they must be rejected. Okay, next is procedure of kidney transplant. When a donor kidney becomes available, it is relatively a simple operation to transplant it into another's body. The old kidneys are left in place. यानी अगर आपका old kidney disease नहीं है, if it is not a cause of high blood pressure or other persistent infections, so like you can keep the old kidney at its original place and you can graft the donor's kidney into the abdominal cavity or into the lower abdomen. ठीक है, आप पहले वाला किडनी अपनी जगह ही पे रहेगा और दूसरा किडनी जो है लोअर एब्डोमेन उसमें सर्जन जो है उसको फिक्स कर देते हैं. So the new kidney is placed in the lower abdomen. Surgeon chooses the site because the new kidney can be attached easily to a large artery. Femoral artery is that artery which provides blood to the legs and is usually right next to the bladder. ठीक है, bladder के बिल्कुल साथ जो है वो न्यू किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है या उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है. As soon as the transplanted kidney is connected to the blood vessels, it will begin purifying the blood of waste product. ठीक है, तो वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं जो आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं. Okay, now problems associated with kidney transplant. क्या उसके साथ problems हो सकते हैं? Usually two problems they are there. One is what? Rejection, कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही ना करे, आपके ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन जो हैं उसको एज एन इन्वेडर समझ के उसको क्या कर दें? उसकी रिजेक्शन कर दें. और आप रिजेक्शन को सप्रेस करने के लिए जो मेडिसिन खाते हैं उसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन या एंटीबायोटिक जो होती है, तो समटाइम्स उसके भी टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं वो बॉडी के ऊपर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. Okay, this is treatment of problems related to kidney transplant. So these problems they can be treated or addressed simultaneously by adding extra doses of steroids. यानी उसको steroids की doses को increase किया जा सकता है, या patients are required to take medications such as cyclosporin etc. to suppress their immune system in order to prevent rejection of the transplanted kidney. कि आपके इम्यून सिस्टम को स्प्रेस कर दिया जाए और वो जो है अगेंस्ट द ट्रांसप्लांटेड और ग्राफ्टेड टिश्यू के काम ना कर सके. ठीक है, उसको रिजेक्ट ना कर सके.
If at any point a recipient stop taking the medication, कहते हैं किसी भी वक्त अगर जो रिसिपिएंट है जिसने आपने ग्राफ्ट किया है टिश्यू जिस पर्सन के अंदर या ऑर्गन, अगर वो उसको लेना छोड़ देता है उस मेडिसिन को, तो रिजेक्शन दैट कैन अकर बाय द बॉडी इवन 10 or 15 years after the transplant. Okay, now this is the image showing kidney transplant. ये आप देखें left and right both the kidneys, left kidney and right kidney, they are what they are diseased, means they stop working. अब जो है यहाँ पर इसने किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया है अलॉन्ग विद इट्स यूरेटर, और इस यूरेटर को उसने डायरेक्टली अटैच कर दिया विद दैट ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, ये ब्लैडर के साथ अटैच्ड है, और इसको फेमोरल आर्टरी के थ्रू जो है इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, इसका कनेक्शन इसके साथ बना दिया गया, और ये जो है वेन है, और ये एओर्टा इंफीरियर वेना केवा है, ये दोनों ओल्ड यूरेटर्स हैं, दिस वन इज न्यू और ट्रांसप्लांटेड यूरेटर है, ठीक है, और ये इलियक वेन्स हैं, और ये क्या है आपके पास आर्टरीज हैं जो कि लेग्स को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती हैं या वहाँ से वापस ला रही होती हैं। वेन्स जो हैं वो ब्लड को वापस लेके जाती हैं और आर्टरीज उसको प्रोवाइड करती हैं लेग्स को ब्लड। Okay, so this is importance of kidney donation for the benefit of kidney failure patients. यानी इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है एक पर्सन जिसके अंदर किडनी अपने फंक्शन नहीं कर रहे होते या जिस पर्सन के अंदर रीनल फेलियर हो चुका होता है। So kidney donation is a relatively safe operation and many donors will never feel the loss of their second kidney. ओके, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंडेबल ऑफ ऑर्गन्स, यानी ज़्यादा जो रिप्लेसेबल ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक ये ऑर्गन आता है, एंड सो गिविंग अप अ किडनी काजेज नो डिसएडवांटेज टू योर लॉन्ग टर्म हेल्थ, इजीली रिप्लेस हो सकता है, and in fact studies have shown that kidney donors actually live longer than the general population because donors come from a pool of people in good health, यानी वो उन लोगों में से, क्योंकि ज़ाहिर है जब उसकी अपनी हेल्थ कंडीशन बेटर होगी तो तभी वो अपना कोई ऑर्गन डोनेट करेगा, तो उसका ऑलरेडी जो हेल्थ होती है दैट पर्सन इज विद गुड हेल्थ, तो इस वजह से ओवरऑल उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो बेटर और लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द अदर पीपल ऑफ द पॉपुलेशन। Okay, this is information about Dr. Sayyid Adib Rizvi, a Pakistani philanthropist. अच्छा, इन्होंने जो था इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। So Dr. Adib Rizvi is a pioneer in treating kidney-related diseases in Pakistan. He started off very humbly by just a ward in the civil hospital Karachi, where he treated kidney patients. This eight-bedded ward was established when in 1971, and today it has grown into a full-fledged institution called Singh Institute of Urology and Transplantation. Institute के नाम से इसको familiar हैं लोग। Dr. Adib Rizvi is the recipient of many awards locally and internationally. Okay, now this is interesting fact about kidney transplantation. Of the 16,000 kidney transplants conducted in the US every year, in United States में हर साल जो 16,000 about kidney transplants होते हैं, उनमें about जो है 30 to 40% come from living donors. Those transplants have greater success, यानी उनका success rate ज़्यादा होता है from the transplants which we take from what cadavers. Okay. So student, this is all about kidney transplant. Thank you students.